Once again, welcome all of you. And today our session basically focus on the new telecom network. This is known as the data network. And from today to further next 2 days, maximum 30-minute class because I want every class is very important. It is definitely theory class, but it will be help all of you because basic idea about this. Current telephone number and IP address, you can't go ahead. So this is not related to the book. This completely uh, discuss on practical session. Okay. So first, before going start, yesterday we discussed about telephone network. So we just sharing the if you are offline training for here. So I will physically showing each and every lab, but this is not possible. But hopefully ki after seeing this video you are feel like a real lab visit of LTTC and telephone exchange. So now without delay I just start telephone exchange visit. And see carefully, and then I screen share first, then you possible to able to see. स्विच रूम का तो वहां भेजेगा किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का, तो लोकल किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक MDF रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने PPT भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप LTTC के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे LTTC में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने MDF रूम का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको MDF रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा MDF रूम है। अंदर आ जाइए, बिल्कुल अंदर। ये MDF रूम है। MDF रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का एक टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीच इधर अब कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 को, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में
ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सब की वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के, जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। तो आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से एमडीएफ से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 से चल रहा, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा, आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM है, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, नीचे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना भी, ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठते थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से, अब वो चीज हमें दिखाई नहीं देती, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है, ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ, ये
कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज़ रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी सारी, बिल्कुल। ठीक है, और जब कोई क्राइम होता था तो ज़्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए अब समय के साथ अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है हर चीज़ क्या अभी बिल्कुल, अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारे तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आधी आधी ले लीजिएगा, ले लीजिए, भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना, हमारा PCM कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके, 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा PCM यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये वही ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ठीक, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी अब दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा। ठीक है, अभी एक फाइबर बदल दिया, अभी ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज। Okay, I share all video link in your group. So it is assignment for all of you. Kindly just write your hand, yeah, typing doesn't matter. You have 2 assignment. One assignment is that traditional exchange visit this video, and another one more visit will be after 2 or 3 session will be discussed. This is another assignment. So you have total 2 assignment, and all remaining work we directly done from help of the simulator, so that is not required. But 2 assignment must be timely, you can write at your handwrite and simply send to in a WhatsApp group. Okay, so this is the basically visit of the telephone exchange. So in this telephone exchange we discuss about the nearby 5 kilometer, 6 kilometer, all copper wire collectively available in the MDF room, and MDF room connected to the switch room earlier operator handled by the operator, then timely it will be modified uh, till time it finally convert in the IP switch. And in local call doesn't matter, simply switch room return back. But if you want one exchange to another exchange call, in this case PCM system, modulation system may be used. Okay, so in this visit, 2 most important terms will be we discuss. One terms is the MUX multiplexer. Are you aware? Very well known. What is the multiplexer? And another word I just telling, multiplexing. Okay. So my question for all of you, what is difference between multiplexer and multiplexing?
Definitely multiplexer and multiplexing, many input, single output, no problem. But my question is that both are the same. Yeah, what is difference between multiplexer and multiplexing? Please tell. Please write down. Any aware about this name? Satish, Saurabh? Yes. Kanishka, are you know about multiplexer and multiplexing? I think it is very initial level. Your engineering first year, all are aware about this term multiplexer and multiplexing. Anyone? Sanjana, are you know about what is the multiplexer and multiplexing? If both are the same, either different. All are being a smart, na? Very first day we discussed the three terms, na? Smart, over smart, normal. Yes, Satvik right here, mux is the device that converts signal into the multiple signal. Okay, please. Both are the same multiplexer and multiplexer. Yeah, multiplexing. Yeah, different. Satvik. Yes, Saurabh. Both are the same. Yes or no? First, tell me. Definitely, very already this told all of you. Multiplexing is the process. That means ki different. If in the market when you are purchasing going for the multiplexer and multiplexing, so for you again I repeat, separate devices and IC will available. Multiplexer IC is separate and multiplexing IP is the separate. So that means ki different thing, but work of the both are the similar. Multiplexer is also many input single output. Multiplexing is the same, many input single output. For explaining these two terms, I just give one example. In a classroom, there are suppose 10 students in a classroom, and from entry gate of the classroom, one condition is there. At a time, only one output is possible. At a time, one output is the possible entry exit gate of the classroom. So you have two types of possibilities. One possibility is कि all 10 students, because at a time only one output is possible, so we just all 10 students pack in a bag. Okay, all pack in a bag and at a time all out. So that is the many input, single output. One process is another thing. In the same classroom, one by one, roll number one first go out, roll number two then go out, roll number three. You make a some procedure then go out. So both in the both case, first case is also many input, but before outputting of all students, make a single help of the bag या any mechanism and then output. So it is also multiplex. This is the multiplexer. Okay, because in the multiplexer you are always 2 into 1, 4 into 1. In the multiplexer, just like in the multiplexer, that is the 2 into 1, 4 into 1, okay, 8 into 1. And in the multiplexer, what are due first? Encoding. But in the multiplexing, there are two types of multiplexing. One is the TDM, time division multiplexing, and another is the frequency division multiplexing. So if in the market, if you are going to purchasing multiplexer and multiplexing device, so definitely separate IC will be available in the market, because multiplexer there is the encoding then go single output. In the in the same time in the multiplexing, you have two mechanism how to one by one signal will be II one by one input to send to output. Okay, so keep in the mind. Hopefully you are getting my point. Okay, and in the same manner I will discuss our telephony system ki how to a lot of customer go in the single pair of fiber. Local, every customer have different copper wire, but from one exchange to another exchange
only single pair fiber. How it is possible? It is the possible help of the multiplexer and multiplexing. We just discussed about this multiplexer and multiplexing. First, again, I share another PPT. In this PPT, I just discussed till time how to copper wire based communication system working in the India and another country also. And this is a very simple manner I try to here explain all of you. Yeah, I just explaining here this. Okay. In India, already visit of the telephone exchange and one PPT earlier showing last study. If you are going from one exchange to another exchange, so definitely this is a one exchange to another exchange. In this case, if customer is not related to the local switch, so in this case, our just in visit here one PCM system is available in the switch room. Help of the PCM system, all telephone system may be sent to the main exchange detect. So this is a basically fiber, optical fiber. So how to PCM pulse code modulation, possible key multiple signal in the single output. Okay. So just see this plan here. In this case, in India, 30 channel PCM system is applicable. There are two types of PCM system in a whole world, 24 channel system and 30 channel system. In India, there are the 30 channel means 30 customer, a group of 30 customer. So for one PCM already showing in the video, group of 30 customer. This is the go to the PCM switch of the in the switch PCM 30 customer collect suppose in the in telephone exchange there are 120 customer, so 30 PCM that means ki 4 group is possible, 30 group. So one group one PCM means 30 group of customer, and this is a pulse code modulation depend on time division multiplexing. Okay, so pulse code modulation there are two types of mechanism. One is the modulation. Why modulation? Without modulation, communication system, long distance communication system is not possible. If I want to communicate from one location to another location, modulation is the basic information, basic mechanism. I think hopefully ki all are know about what is the modulation. Okay. So this is the modulation depend on time division multiplexing. So every customer have some time duration, then go ahead. So then come in the DDF rack in the transmission room. Okay, and there is a multiplexer used and this single output. It doesn't matter how many customer in telephone exchange, all customer help of the PCM modulated signal and multiplexing. This is a TDM in the till time and must go to the transmission system. Transmission system have two mechanism basic. One is the multiplexer and another thing from one location to another location, help of the optical fiber communication system. So definitely electrical to optical fiber devices required. So this is known as the source of optical fiber. In the our communication system, internet world, source of optical fiber, two types of source of optical fiber. One is the laser, another is the LED. So just all copper wire, doesn't matter your mobile tower signal, all are finally go to the optical fiber. So help of the laser and LED, it complete convert in the optical fiber. So one pair fiber from one location to another location, one country to another country is possible. One for sending, sending is known as the transmission pair, a transmission optical fiber and receiving. Another location, this is the receiver and same return back detector. Now optical fiber convert in electrical signal. This is known as detector.
In communication system, APD, avalanche photodiode, this detector is used. Okay. So this is convert, return back, and multiplexer, demultiplexer, and again go to the switching room. PCM demodulation, modulation, sending, and demultiplexing, return back, and just convert corresponding desired telephone system from one location to another location. This is the basic idea of how to a lot of customer in the single pair fiber communicate from one location to another location. Okay. Now we just go to the new system here. Okay. Again, I repeat 3 to 4, 5 minutes more. What is difference between current and traditional network and current network? Okay. So first of all, the traditional network completely migrated in the new network. But if we go for the comparison, so definitely in our old telephone system, a traditional network, you are only called to each other. Day by day, we adding some value-added services like fax and SMS in the mobile communication system. But in the current network, line is the same. Optical fiber line is not changed. Line is the same, but in new technology, it is a possible voice, video, audio, other multimedia form possible communicate. Like a Zoom communication this time, you can see my video, my sound, my screen also. So this is all. This is the current time communication system. In overall terms, you can say the traditional network and current network all are basic feature similar, but only word is different. So here I just compare old network. Earlier, this is known as the telephone line, and currently this telephone line nomenclature is known as data network. And there are two types of data network is available in the India. One is the NIB1, another is the NIB2. NIB, National Internet Backbone 1. So old telephone line, if you are getting internet, that means known as NIB1. And NIB2, new telephone line. Okay, both are available because it is not possible if technology change and you suddenly come back and all dismantle of old telephone line, not possible. Okay. Earlier, if I want to communicate from one person to another person, so definitely we have telephone number for calling person, because without calling person you can't communicate to each other. In the today time, smart devices like computer to computer, definitely our computer communicate with your computer only possible if my computer have telephone number and your computer have telephone number. So telephone number basically old name, the new name of the telephone number is known as the IP address. Old time only telephone instrument. Now telephone instrument form is completely changed. Computer, this is the basic, a smartphone, tablet, router, switches. These all are new types of devices for the communication in today's scenario. And remaining two part we discuss day after tomorrow. Tomorrow I just discussed about telephone number. Okay. So again 30 minutes tomorrow you all are joined. We discuss about the telephone number. Then after IP address, I taking very slow first 2 days. Then we going very fast. Okay. Because this is very important. Without IP address basic idea, it is not possible you go ahead any types of networking, any types of cyber security. Okay. Any question in your mind, please ask. Okay, Satvik question is very important, and I hopefully he is asking about modulation, multiplexing, and multiple access. Okay, so just I explain here. Okay, I just explain here about the
multiplexing and by default modulation. Okay. First, what is the meaning of modulation is most important. Everybody knows, and as per our God, our ear, what is quality of my ear? Quality of my ear, we are only feel 20 hertz to 20 kilohertz audio signal. Everybody knows it is the already 20. Everybody know he as per our God, our ear only able to listen 20 hertz to 20 kilowatt. Everybody know. In the simple, in other word, if I telling very slow, are you listening anything? No. If I very high volume, you are not possible to listen. So our ear is the quality, we are only able to understand 20 hertz to 20 kilohertz. Okay. In the simple term, very low sound we are not able to listen, and very high sound is not able to listen. Okay, one thing, first point is that. Second point is that if I increase my volume, okay, what happened? Just my sound heated to you. If high volume, always you feel high frequency. In the rough manner, high frequency. Sound speed is very high. So in another more thing, speed is directly proportional to frequency. Okay, very high speed, that's okay. So normal sound, maximum length is possible in the air 30 meter to 50 meter. Okay. Now, if very high frequency, we can't learn. If I adding our normal sound, my normal sound belonging 20 hertz to 20 kilohertz. If I adding very high frequency, you can say 1000 ml just for learning. Okay. And your voice is only 1 ml. You are dropping 1000 ml water, dropping 1 ml another anything, overall water. In the river, you doesn't matter what you minimum volume you just putting inside in the river, all are river water never change. So same manner, very high frequency sound, this is the not just like 1000 millimeter volume, and your sound adjustment. Overall result is very high frequency, and we are not able to listen this very high frequency, and our sound speed on behalf of this, what is human sound, this speed will be increased up to light speed 3 to power 8 meter per second. That means ki 3 lakh kilometer in 1 second. So just my mobile here, one frequency divider is like automatic frequency, that means oscillator. Yeah, automatic frequency today is a lot of available. Just like saying something, high frequency automatic generated and mix, and my sound already media, you know, either doesn't matter, microwave, optical fiber, doesn't matter, this is the way. So my sound just moving very fast, and another side in here mixing volume, this volume is removed. By default your sound will be listened. So mixing process is known as modulation. Are you know what is the modulation? Modulation nothing. Modulation is just technique how to our weak sound sending long distance. It is only possible if I adding very high frequency signal. In the today scenario, you have a lot of options. Suppose in milk, and one you want to added milk in your sugar in your milk. Somebody help up a spoon. Suppose not a spoon available, 2 glass, it not available, heat on screen. So modulation is nothing, different types of
possibility modulation AM, FM, ठीक है, PM. In the communication system PCM, and current time in the new technology DM, delta modulation, DMT. Okay, so these all are only one target, how to longest distance we move our sound, our today message to long distance. It's only possible. So by default this adding signal is known as carrier signal. Why name given this? Because ultimately you can see this is the carrier of your sound moving from one location to another location. So this is known as carrier signal. Okay, so AM FM is nothing. This is a simply all concept for the modulation is the same manner. Okay, now another thing, TDM or FDM. Okay, in BSNL in the communication system PCM is the most important. So again I repeat, what is the TDM and FDM? By default, you can understand. This is the way for learning for the TDM multiplexing concept. Okay, TDM and FDM. Okay, this is the way. On the way, you have three different truck for the transportation truck. This is the red color. Another truck is yellow color and more color. There are, if suppose for learning, three truck will be there, and every truck just colored by the red, yellow, and brown. Okay, and this location from A location, and some product we want to send B location. Okay, and this is the way. And before reaching the B location, you have one bridge. Okay, water bridge. After bridge, receiving of this project, some people will be here available. Red for red people, yellow for yellow people, and another thing for brown people. Okay. Earlier there is no problem. All three truck. This is the group of three truck, red, yellow, and another group red, yellow, blue. So a lot of group is available. So suppose first starting this red, yellow, blue moving from this location and reaching which condition of this bridge is at a time only one truck can move, not two truck at the same time move from bridge. Okay, only one truck is possible. Okay, so you just live here, just reaching all truck. Which truck malo red is reaching first, he just going cross the bridge. Another side red, okay, this is you are for me, and catch product and move out. Then yellow, move out. Blue, brown, move out. This is very simple. This is known as FDM, frequency division multiplexing, because frequency is treated in our technology by the color scheme. Okay, so this is very simple. Now what problem? Problem is that suppose all truck reach together on this location. In this case, what happened? Who first cross the bridge? First question, if all truck reach together, it is not possible, because this in engineering, every device is thinking as human. So suppose these machine are reach at this point, this bridge point, starting point of the bridge, all are fighting. No, I first. Result, nobody cross the bridge. System will be hang. So in the old telecommunication system, mostly time our system become hanging system. Okay, one problem is here. And another most important problem, suppose this just moving red truck and it become puncture, are you know some damage of puncture. Okay, and just sort out the puncture. This is waiting person, red is coming and go, but after some time this not possible to restoring. So another group moving here in the same time. So this red will be reached first and this red will be taken. Actually this red is for this first red, not for this. This is a cross connection. If you are calling from one person to another person, many times in the old time system, cross communication is a lot of cross communication. You calling to the Mr. A, but by default it
connect to the another due to this reason. So in the FDM system, FDM communication system, two biggest drawback: cross connection, and second is the hang system, hang on. Okay. This system, how to sort out? Very simple. This is the help of the TDM. In the new communication system, in the TDM, this first group move at 10 a.m. Okay. So rate you move 10 a.m. and this rate you collect 10:30. Okay. And same another yellow you 10:10. This yellow you 10:40. Time will be divided. If all reaching here at same time, but allow who 10 first, second, third. So first problem is sort out. Now second problem, suppose if red truck is failure, yeah, some puncture, yeah, damage. So just waiting up to 10:30. If 10:30 this truck, red truck is not here reaching, so just wait for the next 10:45 at 11 p.m. If not come, so just drop it. No, you are next day. Okay. So in this case, cross connection also vanish. Okay. So in the today after 1986, pulse code modulation is depend on TDM system. And in 1986, our communication system fast growing without cross connection. But in the mobile communication, GSM mobile, old mobile, not new, both TDM and FDM, both technology will be applicable. So if you have 3G communication, yeah, old Airtel, old BSNL communication system, definitely cross connection will be there. So this is the difference between TDM, multiplexer, and multiplexer already discussed. Okay, multiplexing basically one by one how to communicate. Okay. So now are getting my point? If anybody some not properly learning, so I share another video, recorded video in Hindi also, so you can listen and must be seen, no problem. Okay. Any more questions? Satvik, now explain. Otherwise, I sharing more my this video today and our recorded Hindi video also you can see. Okay. Any more question you can ask? Otherwise, today's session is over. Tomorrow we'll discuss telephone number system. Then after discuss about IP address. Then finally I provided one simulator and totally go for the practical. And hopefully this week not any issue. You can join from mobile, doesn't matter. But next week try to join our session, practical session with help of the mobile or a desktop computer. Okay. So thank you for today, all of you. Have a nice day. Again, see you all up tomorrow. Thank you.